Hey guys, Shahin, welcome to the video series of Prelims Factors अप्रैल 2021 पार्ट फिफ्थ के अंदर आपका स्वागत है। पार्ट फिफ्थ से आज हम स्टार्ट करेंगे और 45 टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं इस सीरीज के। चलिए स्टार्ट करते हैं 46 से। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को ये एवरी डे ऑब्जर्व किया जाता है। आप याद रख सकते हो 21, 22 और 23। 21 को सिविल सर्विसेज डे, देन अर्थ डे जो होता है उसके बाद 23 को वर्ल्ड बुक डे। आप तीनों ही एक सीरीज के अंदर याद रख सकते हो। क्यों मनाया जाता है ये ऑन दिस डे 1947? सरदार वल्लभ भाई जो पटेल, जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, द फर्स्ट बैच ऑफ प्रोबेशनर्स एट ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग स्कूल एट मेटकाफ हाउस, न्यू दिल्ली in 1947. In his speech, he called civil servants as a steel frame of India. Objective क्या था? To make civil servants rededicate themselves to the cause of the citizens and renew their commitment to the public service. On this day, the Prime Minister Award for Excellence in the Public Administration is given. The award is given in three categories, dividing the state's UTs into different categories. The award was instituted in 2006. 47 जो टॉपिक है अबाउट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टेब्लिश्ड बाय टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995. क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एंड अडेप्टेशन ऑफ इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी फॉर मच वाइडर एप्लीकेशन. रोल्स और फंक्शंस क्या हैं इस बोर्ड के? encourage enterprises to take up technology oriented products. Then second objective है to provide equity capital or loans to industrial concerns and financial assistance to research and development institution. 48 topic है sepsis. Sepsis occur when chemicals released in the bloodstream to fight an infection trigger inflammation throughout the body. This can cause a cascade of changes that damage multiple organ systems, leading them to fail, sometimes even resulting in death. Symptoms include fever or difficulty breathing, then low cause pressure, low blood pressure, fast heart rate and mental confusion. न्यूज़ के अंदर इसलिए था क्योंकि सेप्सिविक जो एक द ड्रग फॉर सेप्सिस विल बी टेस्टेड फॉर कोविड-19 टेस्ट किया गया था इसे। 49 टॉपिक जो है विद्यादान 2.0 लॉन्च्ड बाय द एचआरडी मिनिस्ट्री, जिसे एजुकेशन मिनिस्ट्री भी बोला जाता है. It is a national program for inviting e-learning content contributions. Vidyadan is conceptualized as a common national program for individuals and organizations across the country to contribute e-learning resources for both school and higher education to ensure continuity of quality learning. The content will be used on the Diksha app to help millions of children across the country to continue their learning anywhere, anytime. देन 50 टॉपिक है कासोवाल ब्रिज. इससे पहले हमने दापुरिजो ब्रिज पढ़ा था इसी सीरीज के अंदर, अब पढ़ेंगे कासोवाल ब्रिज. 484 मीटर लॉन्ग परमानेंट ब्रिज है ऑन द रिवर रावी. रावी के ऊपर है ये, और वो था रिवर सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की. कनेक्ट कासोवाल एनक्लेव ऑफ पंजाब अलॉन्ग द पाकिस्तान बॉर्डर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, बिल्ट बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस. Then Kasowal enclave is around 35 square kilometer. It was till now connected through a pontoon bridge of the limited load capacity. River Ravi आप याद रख सकते हो. The enclave was formed because it has the Ravi behind it and the international border ahead of it. International border इसके आगे है और Ravi पीछे, और सेंटर में ये ब्रिज है. There are similar enclaves of the Pakistani territory too, which lie ahead of Ravi and face Indian territory. These Pakistani enclaves, Dera Baba Nanak enclave and Jassar enclave, were occupied by the Indian Army in 1965 and 1971 war. 51st टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. हैव अ नाइस डे.